Hey guys, welcome to the Part Time Hustlers. And आज का जो interview है, that is a very special interview. So the guest for today's interview is Siddharth Khurana, who is a senior, a mentor, and a budding entrepreneur. He has worked with NGOs, a couple of businesses, and he has many plans ahead. So in this podcast, we talked about how much your social life and your mental health and your health in general is connected in your entrepreneurial journey and overall any journey that you take upon in life. And we touch upon topics which include the importance of friends and family in your life, the importance of maintaining a stable mental posture, everything. Right. So this interview, like, it is not just about entrepreneurship. It also talks about many other aspects of entrepreneurship, Yeah. and I hope you like the interview. Now the thing is, the intro is recorded after the video Right. was So recorded. ये Yeah. बात बतानी बहुत जरूरी है because I think we would We properly look look different. different. हाँ, You exactly. look different. I ये look जाती नहीं completely आएगी. different. So, so basically, this podcast was recorded approximately 2.5 months ago. लेकिन बीच में चल I think not 2.5, लेकिन Not months. one and हाँ, a half, like last it's one and a half 20 two months हो 2020 गए. में रिकॉर्ड करा था हमने. हाँ, Okay. 2020 में रिकॉर्ड किया था और वो भी आई थिंक नवंबर दिसंबर अक्टूबर हाँ अराउंड. राइट. सो काफी टाइम हो चुका है वो किए हुए एंड लाइक वी वर बिजी विद आवर एग्जाम्स एंड स्टफ लाइक दैट सो Yeah. होता रहता है. Yes. And 2020 खत्म हुआ तो we were celebrating. अब खत्म हुआ है. राइट. So hope you like the video. Enjoy. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट टाइम हसलर्स. आज हमारे साथ में है सिद्धार्थ खुराना. सिद्धार्थ खुराना इज अ सीनियर ऑफ माइन जिनसे मैं 1 साल पहले मिला था एंड ही वाज वन ऑफ दोस गाइस जिसको देख करके मैं बोलता था कि हाँ, लाइक ही इज वन ऑफ द हसलर्स एंड नाउ ही इज नॉट जस्ट अ पार्ट टाइम हसलर बट अ फुल टाइम हसलर, राइट. सो हम लोग काफी बातें करेंगे एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, राइट. सो सिद्धार्थ, लेट्स जस्ट स्टार्ट थोड़ा कैजुअली पहले कि अब जब कॉलेज खत्म होने को आ गया है तो अब क्या है दिमाग में? Like when I started up my college, initially my aim was to get a good job from here and उसके बाद getting up some experience and उसके बाद MBA and जो मतलब हमारा Indian usual mindset है towards the job perspective. राइट. Like within the last 6 months, I have seen the change up in me, the transition because of the growth I have had. And like whatever I had in mind was majorly because what society has been actually like focusing to do. कि because the society has basically set it up some of the parameters और उसी के हिसाब से जिंदगी होनी चाहिए राइट. as per them, not us obviously. बिल्कुल. मुझे अभी भी याद है, आई थिंक जब मैं मिला था तो यू वर ऑलरेडी इन सेकेंड ईयर, तो मतलब आप सीनियर हो, मेरे 1 साल बड़े हो. तो जब मैं मिला था तो लाइक आई समहाउ न्यू दैट यू आर लाइक यू हैव अ वेरी लाइक डिफरेंट माइंडसेट एंड ऑल एंड आई थिंक वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन बट in this lockdown, ये जो भी 6 महीने का टाइम आया था, I've seen a drastic change in you, and not just in the work perspective but also in the personal perspective. जैसे आपका outlook change हुआ है, मतलब towards life and towards people. So ऐसा Yeah, क्या like हुआ इस 6 महीने में, अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो? that's very true. Like it is not. So all of this was not in exactly like last 6 months, but like before this pandemic as well. Like this pandemic has been very bad on mental health for many people, Right. and like that's really sad because pehle hi there were problems. So basically, the college life was one thing that has actually changed me a lot. Like after first year, there were some things that happened, and uske baad like there were ups and downs in life mentally, and like on different parameters, I would say. Yes, I have been like मेरे को to be honest अपने से कभी कोई ऐसी vibe नहीं आई कि yes I'll be doing something in life or वो वाली because like to be honest मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही motive है to grow each and every Right. time. Life has no meaning to it generally, and so we have to like give it a meaning. Okay, matlab the thing is that you make a game and you play it very well, like in this way that you get to know, you get to achieve flow. So what flow is, uh, basically my abilities and my goals. Okay, Right. so what happens up is
these have to go in proportion. Like, Yeah. uh, if my goals are way too unachievable as per my abilities, up is that I'll be anxious, I'll be worried that if I'll be able to achieve or not, and then it comes like all these self-doubt and all wali things. Yeah. So, and if not, if my goals are like way less than my abilities, then it's gonna be of no use, because like then I'll always be striving up for more, or let's say like I won't be happy with that. Like there's no point to Yeah. it. Right. Boredom So will start. yes, like the meaning of life is what you make out of it and not what others do. That's true. Yeah. Acha, so like as Shubham said, you have become a full-time hustler now. So what kind of work are you currently carrying out? So right now, like it's my dad's business, Call One Accessories, and we are like, uh, matlab, it's all about mobile accessories, data cable, chargers, Bluetooth, headphones, headsets, earables. So also we do OEM for different clients. Like we have done it with Intex, Digitech, Gizmore, Akai, and we are also doing it with a sub brand in the name of Play, which is via Micromax. Got it. ठीक है. So Siddharth, last year we were part of a society in our college जिसपे काफी मतलब networking पे emphasis दिया रहता था. And like we have also talked about this in the podcast कि I feel कि your network is, and यार वो बात आपके मुंह से भी सुनी है. So अभी जब इतना टाइम हो चुका है, like 6 months in, and you're like doing this business, and you have not just this business, like I know that you have also worked with a lot of different businesses and stuff like that. So कितना important है आपके हिसाब से networking and just being like able to talk to other people and making relationships like that? See, so networking majorly depends upon like हर एक फील्ड की एक अलग तरीके से होती है. लाइक Mm-hmm. वी द सोसाइटी वी वर इन उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स थी, हाँ. एंड right now where I am, it has some different requirements. Right. Networking is the key, because कहीं ना कहीं तुम्हारा जो mindset है वो उसी तरीके से derive होता है. If I Mm-hmm. tell you that like I want to uh, start up my own business and I am sitting up with the people who are doing jobs, then I'm sorry that matlab, that sort of networking is not genuinely gonna help. Like you Right. need people who have the same goal as you. Like Right. it's just like doing up relationship problem while not having one. Exactly. That's pretty common, by the way. अगर आप देखोगे तो maximum relationship advices are given by हाँ, single so people. वही I how I deal with these problems are like, अगर मेरे को कोई भी चीज पूछनी है, I have different sort of people for different kind of problems, and I go to like, अगर मेरे को business से related, so I have different sort of people. If personal life, Right. then I have different sort of Yeah. friends. आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज के अंदर ऐसा है कि नेटवर्किंग इज वन थिंग एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद क्लोज पीपल, लाइक जो जिनको आप दोस्त बोलते हो, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है. एंड द पीपल Yes, दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद really it changes your impacts mindset. where you go. If I Exactly. really tell you, like, if your social circle is only about like planning up Saturdays and Sundays, then I'm sorry, like कहीं ना कहीं गड़बड़ है. it's गड़बड़ है. Yeah. At this, like majorly in 20s, what should happen up is that you should be discussing about growth, perspectives. Like I have different sort of friends. There are people whom I discuss like investing or business or Mm-hmm. market trends with. There are then there are other people as well. Like with, so I'll tell you my experience upon this. Mm-hmm. Uh, Before like last 6 months, what happened was I used to do things like I had a very big of a social circle. Okay, so Right. now what happened was that everyone in that social circle was not what I felt towards him.
and like that's obvious. People are not. Uh, let's just not talk about that whole completely, but Right, yes. right, right. So I think now I have categorized. that is definitely one of the biggest changes that I've seen in you. क्योंकि I 6 महीने have पहले categorized people. versus I now, have categorized people. Yeah. So right? 6 months back, that every person who I used to talk with was in my close circle. Now Yeah, I have actually segregated people who I like socializing with and real ones. I talk to real ones about many things, and like it is each and everything rather, and that's a very limited circle right now. And right. actually, that friends that become family is a concept. Like, after talking to them, I realize that. क्योंकि तुम उनसे कोई भी बात करो, they'll help you find solutions to it, and they don't give up on you. That's the best part. That's true. And uh, in a stage where I am kind of, I need reassurances कि भाई सब ठीक होगा and all those things. It's okay. Like, I have seen people doing things like I have told them about my insecurities towards some things, and they have, rather than in place of helping me, they have actually like backstabbed in areas. Yeah, They regularly pinpoint those insecurities in order to get back to me, and that's right. something that which is very bad. And see, the thing is that I'll talk about trust on this. Trust is something that once gone is gone. A Yeah, person can be changed from outside, but not from inside. inside. Like, Mhm. he or she would be who they actually are, and they can actually portray it, portray something else to others. But Right, right, eventually, if I have seen it, if they have done it before, they'll do it again. If they get opportunity to get back at me, maybe, or anything. Like, till now, they aren't able to do anything. That's okay, and I don't think that even I'll be giving up a chance once I have seen that. And that's the reason I don't keep them in my close circle, and that's obvious. Like, right. as I tell you that मैं अगर एक बंदे पे भरोसा कर नहीं पा रहा हूँ, that actually gives me a benefit, that it is kind of a, I'll call a self defense mechanism to protect yourself from anything that they can actually do further. That's true. इसका पता है मैंने इससे एक बात निकाल सकता हूँ. When you said that you have told people about your insecurities and they have backstabbed you, I've noticed one thing that generally in our culture हमारे elders हमें एक बात बोलते हैं कि don't tell other people about your insecurities, right? I think your grandparents या parents ने ये बात कभी ना कोई आपको बोली होगी. But धीरे-धीरे हमारा culture ऐसा होता जा रहा है कि we are getting open to things and all, and we do talk a lot about our insecurities and our problems. But धीरे-धीरे आपको realize होता है कि हर किसी इंसान को आपकी insecurities पता होने का हक नहीं है. हर किसी को नहीं है, and that's the reason I'm telling real ones and the people who I socialize with. Exactly. So when you have to see it very clearly that what kind of jokes are you thrown at. Hmm. Like, Hmm. people throw a lot of hate when they speak about you, and they basically cover it up in terms of a joke. Right. ठीक है. Now what I do is I see each and everything. I just play along. हाँ. ठीक है. And that's the thing in the long run. तो अभी खराब मत करो, and like who was who to you will, if I'm not getting back at you, then but you eventually are not even getting help of mine, getting it. Right. And I know the stage where I am, like, I'll be way better than what others are doing, like that sort of people. And I know that I'm done with them, so it's completely fine. Right, right, right. So I think when you surround yourself with negative people, वो कभी ना आपके साथ में उल्टा भी कर देते हैं. जैसे कि अब वो आपके दोस्त हैं, ठीक है, but you consider them your friends, but actually they are negative. So दिव्य आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? I guess जब आपके कुछ like पर्सनल एक्सपीरियंस पहले हो चुके हैं.
Actually, I think सबकी life में there are such kind of people. It just takes time and perspective when you realize that these people exist and how you deal with them. Like Right. like Siddharth said, he instead of cutting them off like right away, you like to play along and realize their place in the long run instead of like getting revenge or getting back at them. I'll tell So you this. So, yeah, like, uh, when you like hang out with lions, it is quite evident that one or two times they are gonna be taking a swing up at you, and yeah. Right. that's fine. Like till the time it is not hurting me, I'm completely fine. Hurting me, like tearing me apart or something like that. So yes, like it is actually important to know that इस बंदे की अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है, and if they even speak very shit about you, it won't matter up to me, because what essentially matters up is that what the circle, that the people who I have, the friends that become family वाला circle, Yeah. वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. लाइक टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक अबाउट कि यार आज कोई मेरे बारे में कन्फेशन आ जाए और समथिंग लाइक दैट. आई वोंट बी like much of worried, because I know कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है इस सब से, that Yeah. what others are thinking. What my people are thinking about me is something that actually matters to me. I think when you build up that close circle of safe haven, when you have those close people around you, तब बाहर के इतने matter नहीं करते, because you have your family, you have those friends, and बस वो matter करते हैं to you. यार वो पता है क्या होता है, हाँ exactly, and that's the point. Those people know that what they mean to me. Yeah, Trusting them is my choice, and like how to deliver the trust back is there. Like it's totally up to loyalty. For me, friendship is loyalty, and that's like I'm not expecting them to go all in upon me, because like there have been times when I have stood up for them, and I just need that when I go through something bad of like जब मेरा बुरा टाइम आएगा, I want them standing. I don't want them dealing up with my problems, but I just want them standing right by my side when I deal with them and myself. Right. so you were talking about your personal life and your entrepreneurship, call one accessories. So like, what is one of the biggest obstacles you faced in your journey, and how did you overcome it generally? The biggest obstacle which we face is the basically it's not something that is actually obstacle. It's something up in here. It's Mm. self. Every time, like if you ever talk to an entrepreneur, that's the one thing, because every time we are doing things, it's just to make our life better. कि बस इससे better होगा कभी. If I tell you, I have seen very bad times when all of this journey was started. I was back in like 6 to 10s, and there was a money crunch. So essentially the thing was that I felt कि मेरी सारी की सारी problems का एक ही हल है, that was money. As I told you that I have Right. seen very bad times with money. ठीक है. सो कहीं ना कहीं दैट वाज अ ट्रांजिशन, दैट उसी को लेके ही, दैट सेल्फ डिपेंडेंस और उस सब को लेके आई जॉइंड इट, कि भाई अपना ऑर्डर, अपनी सेल्स एंड ऑल दैट. नाउ दैट आई हैव इट, ठीक है, मतलब अब आई एम नॉट समवन हु इज एक्चुअली स्ट्राइविंग अप फॉर मनी. Being an entrepreneur, this is something that is very important, that you have to give yourself goals. Now Right. from the very beginning of this journey, my whole thing was कि यार पैसा कमाना है. I started getting it, and now I'm at a stage that money is not something that amuses me. Mm. Obviously, I'm not saying that money is not important. Money is important. Money is important to give you experiences, Right. because without money you won't be having it, and with money comes a lot of power, and there are things ki no one like. I am already sitting up into the big tables, and I don't feel any way inferior that he is at this stage, or he the other person is at this stage. Obviously Right. like people would be up and down from where I'm standing. It's business we are talking about, and not some standing or a productivity contest or a getting it. So the whole point is that you have to get yourself every day. I get up, I need a different sort of a motivation.
to cheer me up and go to office and rock the shit out of it. Right. So for me, it was money essentially. Now it is something that I'll call my reputation that I am building with time. And yes, so as I told you that it's the flow that I'm achieving Right. Yeah. with सो time. सिद्धार्थ भाई, हम लोग लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे एक बार, तो लाइक आपने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था. एंड यू नो लाइक दिस इज जनरल कंसेप्शन इन द सोसाइटी दैट वंस यू हैव मनी यू विल बी हैप्पी इन लाइफ, है ना. मतलब ये बात बोलते हैं कि लाइक विद मनी कम्स हैप्पीनेस. एंड आपने वही थोड़ा मुझे बताया था कि दैट इज नॉट हाउ इट इज, राइट. सो सी, हाँ. I'm not saying that ki you're super rich, but I think if you look at a 20-year-old, right? 20-year-old के हिसाब से like मे बी कोई, मैं किसी को नहीं जानता जो शायद अभी इतना कर रहा होगा जितना आप कर रहे हो, राइट. तो सब लोग देखते हैं कि ओके यार, सिद्धार्थ खुराना, लाइक ही लाइक उसको देख के पता चलता है लाइक बंदा काम कर रहा है और लाइक ही हैज यू नो सम कैश. सो लाइक डू यू थिंक कि दैट अच्छा, गिव्स यू पहली बात तो ये हैप्पीनेस इन लाइफ? कंसेप्शन नहीं, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है. इतना है कि बस हाँ, हाँ जरूरतें पूरी हो जाती हैं. हाँ ठीक है. एंड आई हैव सम पेनीज लेफ्ट फॉर मी सेविंग अप और इन्वेस्टिंग. लेट्स सी. राइट राइट So राइट. yes, a lot of things are, or society is basically a very, how do I call it? So basically क्या होता है, हमारे ना सोसाइटी ने कुछ सेट पैरामीटर्स रखे हुए हैं. देयर आर Right. थिंग्स कि 20 तक ये होना चाहिए, 25 तक ये होना चाहिए, 27 तक ये होना चाहिए, 30 तक ये होना चाहिए. एंड because of all that, you don't get to get experiences which you can. Right, right, If right. I tell you about me, I exploded within these 3 4 years. Last 3 years have actually been a roller coaster ride. I have seen a Right. transition in myself कि पहले मैं किस तरफ सोचता था, and now I where I'm thinking about it, and that was also heavily because of money. But now the, like, it's about the end goal of life. It's not money, freedom, not even financial freedom. It's about freedom that I can take off whenever I wish to. I can go wherever I want to, and I can do shit that I actually wish to do, and I'm not bound with money or time. I have these two things for myself, and for if I need to grind in my 20s for that, I'm completely okay. Look, like I've just started it, I know, and yes, uh, there are people who are doing even better than me. So I Right. don't call myself better than it. I'm just a person standing up into the crowd, not more than that. But yes, Right. there are things that this society actually implies upon you, and that actually happens up is when you start like having up money. And I'll so अगर तुम कभी भी अपने से 30 40 years बड़े लोगों से बात करोगे ना अबाउट हाउ टू गो अबाउट आई हैव दिस मच ऑफ मनी, हाउ टू ब्रेक इट अप एंड इन्वेस्ट, ठीक है, Mhm. the Yeah. things they'll come up with is property ले ले. Property. Hmm. Number one is Real estate. property or Yeah. gold or things like that, because stock market is way too risky for them. They स्टॉक don't मार्केट know. का बात ही नहीं होगा. सबसे पहले रियल एस्टेट, उसके बाद में हाँ, गोल्ड, उसके so आगे एफडी. वही दैट्स वही इट. वही 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 हाँ, FD as well. So यही. अब क्या होता है, अब भाई, just think of it this way. You uh, I know someone, ठीक है, and he told me this, that while he started getting money, like he had a quite high paying job, what he did was he built a backup house, backup house till 30s, and to hell with it, like he's paying installments and no one is staying up there. राइट. ठीक है. सो दैट इज कहीं ना कहीं हमारे को ना सोसाइटी की परसेप्शन, बट अदर्स थिंक ऑफ अस. सोसाइटी ये भी कहती है कि भाई ये, लाइक जस्ट थिंक ऑफ समवन who is very rich but doesn't likes to show it off. He doesn't wear brands, not a very big of a premium car, just a normal lifestyle. राइट. Yeah. We don't see that happening up in society. And I'll tell you this, a person who is actually earning now, he won't ever show it off to you. राइट. And that's where we actually uh,
So we basically have a house to feed and not a society to impress. ठीक है? Hmm. And I'm telling you this very clear upon this that people have actually made up a perception कि पैसा ही खुशी है. ठीक Right. है? और our happiness or our success is defined on what we are doing in our uh, like work life or like हम पैसा कैसे कमाते हैं, हम किस स्टेज में कितना पैसा कमाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं. And that is where all these things as well come. Insta, Snapchat, you will see people going to different places. Even I go Yeah. out, but it's just a दिखाने की और देखने की डिफरेंस होता है, राइट? Right. Yeah. अभी लाइक रिसेंटली लाइक जैसे आप जो बोल रहे थे कि जो इंसान पैसा कमाता है वो कभी शो ऑफ नहीं करता है. आई डोंट नो लाइक थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे. रिसेंटली आई थिंक ये हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं बट लाइक दिस इज हाउ सोशल मीडिया इज गोइंग आजकल. लाइक आई रिसेंटली सॉ समवन स्टोरी जिसने ना अपने लाइक गाड़ी चलाते हुए सामने ना सारा पैसा फेंक रखा है. ठीक है ऐसे ना बोनट पे ऐसे. और ऊपर लिखा हुआ है किसी का बाप का नहीं खुद का कमाया हुआ पैसा है. तो लाइक आई डोंट नो नहीं, हाउ देयर थिंग्स आर आर सुनो चेंजिंग सुनो धीरे सुनो धीरे. सुनो सुनो देयर इज अ डिफरेंस. अच्छा, just think of it this way that if I enter up a new business, ठीक है? राइट. So social media can be a big power to you and a big curse as well. या. If you are addicted, like I have started now actually going backwards towards all the things. Now I am not too much into social media, and Yeah. like the things I used to see earlier, my feed was quite different back then, but now my feed is quite better right now. It's way more motivating and positive. It used to be very much negative back then. या. So if I'm starting up a new business, okay, if I'm starting up a new venture, I cannot, uh, and I don't have contacts in that या. industry. So obviously I like to get someone to help me out, and if social media actually helps it out, then that's the reason. And to be honest, social media is actually very good for startups and all. Like there's this Amazon Launchpad and many other things that are there for startups. And राइट. उसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग की तो बैकबोन ही है सोशल मीडिया. Many of the traps as well, but if you're wise, you'll decide yourself. Yeah. So I think my next question is like, how important do you feel it is to, work on your social and personal well-being while following an entrepreneurial venture? And like while being in college, how easy it is to do that, to maintain that work-life balance? Ah, with college, though, it is not very good of an experience for me. It was quite possible because of whole of this pandemic situation, क्योंकि classes online चल रही होती थी and ब्लेसिंग इन you डिस्गाइज. don't, yeah, actually, like you don't know if a person is actually sitting up or not Yeah. on या. the screens. That has actually backfired me like sometimes, but it's okay. So this, I actually say this a lot, that this pandemic has changed the outlook of life about many of the things. And earlier it used to be कि भाई हम कॉलेज जाते थे, हम मिल लेते थे दोस्तों से, और we used to go for outings and all. Now all of us are like, even okay, so I'll also like to bring up my schedule up over here. I usually get up at 8:30. I go for a walk morning, and that is not actually a very good, like, not the appropriate time, but that's fine because you'll get to know it. So then I leave for office, and there's no definite working hours. I like, 9 to 5 or something like that. It's from opening my eyes till getting back home from work. राइट. And उसके बाद I get some time for me, and that is important because कहीं ना कहीं ये होता है कि आई जितना भी मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है ना, वो आई गेट इट आउट. बिकॉज लाइक जब नॉर्मल टाइम चल रहा होता है, यू कैन टेक आउट फॉर थिंग्स लाइक थेरेपी एंड ऑल दोज थिंग्स. बट इस टाइम पे आई बिलीव योर फ्रेंड्स आर योर थेरेपिस्ट. Because to be honest, while I get back from work, there have been days I have came back at 1, at 12, at even late times. कभी कभी जल्दी भी आ जाते थे. लाइक इट ऑल डिपेंडेड अपॉन कि प्लान्स थे नहीं थे. एंड दिस इज वन थिंग आई रिग्रेट बिकॉज ऑफ दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन. आई haven't had very good memories with like
my friends used to play up games and all, and I never preferred it because I wanted to talk to them, and games wasn't. It's fun, but I would like to rather talk about my everyday or what they did because that's important. To Right. be honest, like you have to uh, get a circle who actually motivates you in every day. Yeah. Like सिद्धार्थ भाई मैंने एक बात नोटिस की है आपकी जैसे you always make sure that you call someone and like once you get back after work you say like you Yes. maintain the relationship and now right so how relationship मतलब दोस्तों वाला right Uh-huh. That's fine. नहीं शक्ल अजीब सी बन गई थी ठीक है so मतलब how important जैसे आपने पहले बोला था कि friends have really helped you and like you just said that friends are like therapists right now so थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ बोलना So है see, like some friends can be therapeutic, and that's good. right Because essentially, what I prefer is I don't like opening up to many of the people because somehow it makes you prone, yeah It makes you vulnerable. vulnerable, right? Towards many things. Matlab, just take it this way that a person, if I'm close to someone right now, I don't know I'll be with him 5 years down the line. yeah And if he or she knows the way I think, the way I process things, and all those things, then it can be actually of a big problem. And that is the reason I find therapy way more useful. Like this whole mental health and all concept is very much matlab, people have actually neglected it for a long time, and I don't know why. yeah Even I have seen people of 70s 60s framing it up as घबराहट हो गया, हाँ and that is very usual. Like सभी को होती है यार किसी ना किसी Yeah. stage पे. Everyone goes through this stage in his or her entire life, and people actually like तू साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, पागल है. People have actually framed it in this way, just like लोग क्या कहेंगे is a perception in our society, Yeah. and that right is something very bad. मतलब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता अब लोग क्या कहेंगे. मेरे को बस इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड एंड थेरेपी में यार कुछ बुरा नहीं है. इट्स जस्ट लाइक you go to gym for like your body to exercise Yeah. or warm up. It's just like uh gym to my mind. एग्जैक्टली अच्छा सिद्धार्थ भाई मैं थेरेपी के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करना चाहूंगा लाइक हाउ हैज इट रियली हेल्प यू अगर प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात करें तो लाइक हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन विद इट एंड लाइक व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ इट ऑल्सो जब हम लोग थेरेपी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग थेरेपी इज ऑल्सो अबाउट Yes. लाइक अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम सुनो हो रही सुनो है सुनो. So whenever या you are prescribed to a therapist, तो मैं या एक बात बताता हूँ. एक दिन में ये 10 दिन में कुछ नहीं होता. You have to take proper time. And Yeah. या therapy, why is it important? Like now, there have been like changes with me as well. Sometimes I'm not able to get time out for all that, and that's where the importance of other people come into your life, friends that become family. या Yeah. हाँ. So therapy कहीं ना कहीं ये होता है that you have, it actually matters a lot how your upbringing has been, and it's a chain of events like how you perceive different things. Uh, so if a person whose father is a drunk, he has a very bad perception of it towards the people who drink and smoke. Okay. Yeah. एग्जैक्टली So it is a chain of events, and to understand that, you have to like tell them your entire journey rather than what you are feeling of just right now, because what you are feeling right now depends upon majorly upon how your upbringing has been, Yeah. what you have seen in your life in front of Past you. experiences. Sometimes there are events that get stuck into your head and you're not able to get out of it. Yeah. Okay. So basically therapy is like just all that jumbled crap to opening up bite and bite. Okay. So, Yeah. and that is very much essential because
sometimes when these things crumble and make up a big heap, it can actually do very bad of a thing. And I have been in that place, and I don't want to go back in that place ever. राइट। आई थिंक मैंने एक जगह पे ये बात पढ़ा था कि लाइक आगे जाकर के लोगों को जो फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इफ यू सी देयर पास्ट, तो उनके साथ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है, मे बी नॉट डायरेक्टली, मे बी इनडायरेक्टली, जिसके वजह से आगे जाकर के आदमी को लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि मे बी इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ, जरूरी नहीं है कि देयर इज समथिंग जो कि अभी रिसेंटली हुआ हो जिसके वजह से यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम। देयर मे बी मेनी रीजंस, इट कैन बी इन द पास्ट, एंड मे बी इट इज जस्ट समटाइम्स इट इज जस्ट hormonal imbalance for which you have to go to a psychiatrist and like he will prescribe you some medicines, जो कि मतलब बहुत important है। So लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि कुछ ना important कुछ हुआ है जिसकी वजह से important प्रॉब्लम हो रहा नहीं है, बिल्कुल। Now there is a very, इनको एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं, पागलों का डॉक्टर। इवन व्हेन है। आई स्टार्टेड ऑल दैट, सो कि मतलब कईयों का बहुत बुरा भी था इसके सारा के सारा इम्पैक्ट। एंड Yeah. आई I have seen it with myself and with others what being in depression actually feels like, clinical depression, and how bad it can actually turn out to be, because it's very difficult to get out of it on your own. But राइट। once you do, that's uh, so how, देखो, I'm not saying that everything can get better with therapy. If I talk personal example, I don't trust people very easily. You have to get into that circle of mine where I start trusting you. And a person who has like, अगर किसी ने मेरे साथ पहले बुरा किया है, so I'm sorry, you're not getting into it राइट। ever. And that is something that is bad as well and good as well. Like as I told you guys, that self-defense mechanism, and that's completely fine, क्योंकि भाई कुछ लोगों की नहीं चाहिए होता, you cannot actually have everyone. That's the, That's that's also a perception that people do, the mistakes they commit in order to please everyone. They do things, and then after a year, I'll call it a college fame as well, कि भाई तुम्हें को बहुत मजा आ रहा है, कॉलेज की फेम yeah. मिल रही है, कुछ तुमने चीजें करी, और mm, you'll get all of it like once you leave college, और एक साल हो जाएगा, and those करेक्ट। things would be just kept till there and Yeah, you cannot not carry in it your forward life. in your Yeah. life. Yeah. So that's the mistake people actually do. राइट। So, Siddharth bhai, you have worked with a lot of businesses, like एक दो साल में अभी, like इससे पहले भी, like you were with an organization. So, how has your entrepreneurship journey been like? और जो आपने एक बार पहले मुझे सोसाइटी के बारे में बात किया था, that there is some social stigmas and some societal pressures that you have to go through. तो अगर आप उसके बारे में थोड़े बात कर सकते हो तो। Yeah, sure. So as I told you, कि what actually people do is कि if I'm having up some problem, how would it be solved? The हम्म। major problem was like, if I people see कि happiness is equal to money, as you told that या। before. I'll just tell you this: happiness is the journey and not a destination. राइट। ठीक है, आई एम मेकिंग दैट वेरी क्लियर, क्योंकि भाई यू कैन बी हैप्पी एट मोमेंट्स इन योर लाइफ, यू कैन नॉट बी हैप्पी योर एंटायर लाइफ, बट प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, यू जस्ट नीड टू सी हाउ यू डील विद इट। कैसे राइट। तुम उनको लेके बैठे रहो और गो आउट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड दैट इज वेयर ऑल दीज थिंग्स, थेरेपी, फ्रेंडशिप एंड माइंडसेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आती हैं। ठीक है। एंड सो अबाउट द सोसाइटल, जो सोसाइटी में ना काफ़ी सारी चीज़ें, राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू योर पर्सनल लाइफ, और सोसाइटी हैज़, and the thing is that we tend to not break this social stigma of ours कि भाई on just of the merit of कि लोग क्या कहेंगे, and this is the biggest scam. राइट। ठीक है, it pushes you not to go chase your dream every time, because if I'm stable at this point of time, and if it's just like कि stand up comedian, just think of it this way: I'm very much stable up in my life, और कल को मैं जाके बोलूँ that I want to do stand up comedy, या। I want to be a stand up comic,
people, first of all your parents and then your family and then your friends are gonna be after your life. Why not to chase your dreams? Like जीनी हमने है हमारी ज़िंदगी, सोसाइटी ने नहीं जीनी आके, ठीक है? एंड दैट इज़ द रीज़न, और पीपल आर गोना बी गिविंग योर प्री फंड के एडवाइसेस आके, चलो तूने ये कर लिया है, अब ये कर ले। क्यों? Right. Why should I listen to anyone? And on this I go very much clear, and there's a there are two ways going about it. Orthodox way, उनकी बात सुनो, Yeah. करो। अनऑर्थोडॉक्स वे, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, एंड दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट कि निकाल दो, ठीक है? कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अटकी रहेंगी, वो कहीं यू विल थिंक ऑफ इट, और कहीं ना कहीं यार सारे ये करते हैं, हम भी करते हैं। अगर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, how am I gonna be getting about different output if I'll do the same thing which others have done? Yeah. Getting it? Right. कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारे को यहीं पे पुश करते हुए गलत हो जाती है, एंड रादर देन सो वन इट डिस्टर्ब्स योर फियर, ठीक है? कि भाई तुम ये चीज़, लोग क्या कहेंगे, Yeah. सोशल स्टिग्मा, ठीक है? उसके बाद हाउ कैन यू गेट अ डिफरेंट आउटपुट वाइल यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, लाइक जो ऑलरेडी लोग ट्राई एंड टेस्टेड कर चुके हैं ना, हाउ इज इट पॉसिबल भाई मैं भी to become rich, even I am doing one thing which a person is doing from more than 5 to 7 years. Right. How am I going to be getting up a different output from it? So on this I'll call that resist the obvious, ठीक है? जो भी लोग अब बोलते हैं, इट इज नॉट एसेंशियली लाइक कि उसको मानो, ठीक है? सुनो, समझो, करो वो जो तुम्हारा दिल कहता है, दिमाग कहता है, ठीक है? Right. रिस्क उठाने चाहिए लाइफ में, बट इतना नहीं कि कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ, ठीक है? देयर आर गोना बी स्टेजेस एट लाइफ वेयर यू विल फील स्टक, लाइक देयर वोंट बी नो वे अप, देयर वोंट बी नो वे डाउन, एंड दैट इज वेयर कहीं ना कहीं जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस, इट हैजंट बीन अ लॉन्ग जर्नी टू बी ऑनेस्ट, बट यस इट हैज सीन अप्स एंड डाउन्स। सो मेरे को पता है कि बुरा टाइम है तो अच्छा भी आएगा, एंड जस्ट एक सिर्फ उसी एक टाइम के चक्कर में ही इट कीप्स अस गोइंग। Right. सोसाइटी अब जैसे एट आवर स्टेज, व्हाट इज द थिंग दैट इज गोना मेक यू लेट्स से कूल इन कॉलेज? हाउ आर यू गोना बी लुकिंग अप कूल इन कॉलेज? आई वुड लाइक टू आस्क यू टू ऑन दिस। Okay. Okay. तो सी आई वुड आल्सो से कि कूल की डेफिनेशन कॉलेज टू कॉलेज बहुत डिफरेंट होती है, राइट? लाइक हमारे लेकिन कॉलेज की बात करते अगर हैं। हमारी कॉलेज की बात करें तो अच्छा नहीं बहुत ही नहीं, रहने दो रहने बहुत दो ही रहने अजीब दो, क्वेश्चन है हमारे भाई। कॉलेज की नहीं, वैसे बेसिक No. डेफिनेशन हमारे एज ग्रुप की। यार देखो, हमारी एज ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो लाइक वही बात आ रही थी कि दिस इज लाइक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, लाइक You're द avoiding the सोसाइटी question, व्यूज Shubh. दैट, हाँ यार वही मैं बता रहा हूँ। सो वैसे बहुत पता है, एक्सपेक्ट नहीं किया था क्वेश्चन आने का मैंने, लेकिन चलो ठीक है। मैं बट लाइक आपसे ये हमारी podcast से क्वेश्चन बट कम ऑन, पूछूंगा। लाइक हमारे दिमाग में काफी परसेप्शंस होती है जो हम लोग That सोचते is भी true. कि यार ये क्यों है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आई थिंक कूल यार, ऑनेस्टली लाइक वो जो एक बड़ा सा ग्रुप होता है ना, जिसके साथ में हमेशा लोग आर पार घूमते रहते हैं, और उनका जो जब वो क्लास में बैठते हैं तो पूरी एक क्या 1.5 रोज उनकी होती है, 1.5 रोज उनकी है, बाकी सारे ऐसे अकेले अकेले बैठे हुए हैं, तो उनको जनरली में कूल समझा जाता है, जो कि समझा। हमेशा कॉलेज जस्ट के अ हर प्रो टिप, इवेंट। जस्ट अ प्रो टिप, जो भी चीज़ बड़ी शुरुआत होती है ना, वो एंड में आके टूटती है, और वो बहुत छोटी टूट The जाती bigger है। you are, the harder you fall. राइट, बट लाइक दैट इज हाउ द परसेप्शन इज कि यार वो कूल लोग हैं। इसलिए इसलिए अपने ग्रुप की जगह अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करा करो, एंड दैट्स द एडवाइस आई एम गिविंग टू यू बोथ एज वेल, एंड एनीवन आई एम या टॉकिंग फ्रॉम आवर Yeah. एज ग्रुप, Yeah. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट व्हाट यू आर इज डिफाइंड, कहीं ना कहीं मेरे लोग एक टाइम के बाद हो सकते हैं मेरे से डिफाइन हो, हाँ, गेटिंग इट? राइट, और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं कि यू एक्चुअली स्टार्ट एडिंग अप थिंग्स इन द लॉन्ग रन। अब मैं जो सारा का सारा मेरा रीजन था, आई प्ले अप अलॉन्ग पीपल, आई नो हु इज रियल टू मी ऑन माई फेस एंड बिहाइंड माई बैक। सो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आ जाती हैं प्ले में, ठीक है? इट इज़ नॉट समवेयर कि
हाँ, जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो ये होता है कि हाँ, हम भी कुछ ऐसी चीज़ों को देख के लेके सोचते हैं कि ही ये ऐसी जगह पे रहता है, ये पहनता है, ये चलाता है, गेटिंग इट। बट Yeah. कहीं ना कहीं ये होता है, इट इज़ मोर अपॉन द बेसिस ऑफ your decisions you make. Like a person who is reinvesting all his profits in his business to expand it is at a way more better place, who is not investing up at all and going to all these amenities or Yeah. luxuries, getting it. So Yeah. हर एक चीज़ का ना एक अलग परसेप्शन होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ चेंजेस टाइम टू टाइम। राइट नाउ एज आई टोल्ड यू, लाइक अभी हमारी एज ग्रुप वालों को ज़्यादातर का मोटिव ये होता है पैसा कमाना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है, Yeah. घर वालों से नहीं लेना। ठीक है, मे बी एट 25 इट्स गना बी डिफरेंट, 30 इट्स गना बी डिफरेंट। Yeah. ठीक है, सो इट्स अ जर्नी। एज आई टोल्ड यू, हैप्पीनेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। एंड ऐसी ना काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं जब हमारे को लगता है कि वी हैव रीच्ड एट अ पॉइंट वेयर Yeah. वी शुड बी, एंड Yeah. उसके बाद वी tend to get new goals. Like life's a game. ठीक है, life is a game, you make a game out of it and you play it extremely well. That is when you go. Yeah. That's correct. Hmm. So like I had one question in mind, like you were talking about like society has already planned your life, like it has some fixed preconceptions and you are supposed to follow it. And it's very hard to, make your own decisions, or like you were talking about being a stand-up comic. It is not very common to do that. So लोगों को लगता है जब तभी you get negative things and all. And mainly you were talking about like how your motivation or how your end goal is not making money right now, right? So what is your motivation right now to, do businesses or work on yourself? What is your My goal, I guess? motivation right now is just to so this is something even I am struggling up right now because this stage has come recently. Yeah. ठीक है, Mhm. and as I told you, my final goal is freedom. ठीक है, Yeah. so all of it basically, it is just like doing this for some time and also finding up a sidekick. I need to like get amused up of, I get bored of very easily now. Yeah. Like what I know what I do and I am the best at it, and people are not able to beat me in what I'm doing. So that is, and that is something, that reputation that I like to carry on, and that is something that is actually giving me up a kick every day to Yeah. be the best, to thrive, to be the best in my industry. And that's uh, that's that's wrong कहीं ना कहीं, which I feel, because तुम ये चीज सोचो that reputation can be like this gonna come a person just like a underdog who is gonna come and Yeah. sweep away the game. I know it's gonna Right. take some Right. time. It's gonna happen up eventually, and I know that. ठीक है, Mhm. so ठीक है, लाइक इवन आई एम ट्राइंग टू फाइंड अप माई न्यू गोल कि अब मेरे को अब क्या चाहिए लाइफ Yeah. में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट पहले मैं जब घुसा था, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, ठीक Yeah. है, इवेंचुअली आई स्टार्टेड सेविंग, इन्वेस्टिंग, एंड अब व्हेन आई हैव दैट कि मैं अब ये कर सकता हूँ, तो Yeah. आई डोंट वांट इट एनी मोर बिकॉज आई Yeah. हैव It अंडरस्टूड changes. Yeah. दैट that's like what we call maturity, right? Correct. Maturity of thoughts. And Yeah. I now see, earlier I used to see, now I see aspects कि मैं और कहाँ से कमा सकता हूँ कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, and eventually even after getting to up to there, I just see यार कितनी मेहनत लगे है यहाँ तक आने में, I cannot like do that, जो मेरे पास बचा हुआ अमाउंट है उसको मैं जीरो नहीं कर सकता हूँ, so Hmm. Correct. hmm, सिद्धार्थ भाई, मेरे दिमाग में एक रैंडम सा मतलब एक थॉट आया है, एंड दैट इज, हम लोग सोसाइटी की प्रेशर की बात करते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर है कि इस एज तक यू शुड लैंड अप इन अ जॉब, इस एज तक Yeah. तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, फिर इस एज तक ये वो, लाइक दैट इज हाउ इट इज, इस एज तक एक बट एक वो घर होना चाहिए ऑल राइट। बट डोंट यू थिंक कि जिस तरीके से लाइक द यूथ इज चेंजिंग एंड द लाइक द न्यू जनरेशन इज चेंजिंग, क्या ये भी एक सोसाइटल प्रेशर नहीं है दैट
कि तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसा You कमाना also have to है, change, that yeah. you have to hustle hard till 30 and then retire by 40, जैसे आजकल जो बातें चल रही हैं. So isn't that also social stigma कि तुम्हें ये करना है, तो सब लोग वो करने के बीच में लगे हुए हैं. Yeah. सोशल सिग्मा, ये चीज समझो, आई कॉल इट, मतलब जैसे इफ आई टेल यू अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ माय बिजनेस, आई हैव अ वेरी रिजिड प्लान कि अगले मेरे को 5 सालों में क्या करना है. ठीक है. Yeah. कहीं ना कहीं हाउ पीपल मेक मिस्टेक्स इज कि उनको बस ये चीज़ हो जाती है, यार ये इसने तो ये कर लिया लाइफ में, मैं तो मैं तो अभी यहीं स्टार्ट पे भी हूँ. नहीं हुआ. हाँ. ठीक है, मेरी लाइफ. सो दैट इज रॉन्ग. कहीं ना कहीं मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ. अब हाउ हैविंग अ गोल्स इज नॉट अ राइट थिंग. लाइक set targets. They say, I'm telling you, I have a 5-year business plan right now ready up in my mind. ठीक है. कहीं ना कहीं each and every one of us gets great opportunities. ठीक Yeah. है. Great opportunities is not something that is going to be planned. Yeah. Never. It is going to be like it's just going to come out of your way कि भाई एकदम से आ गई, and it's a shot. Either Yeah. take it or leave it. So what happens up is when we are way too much rigid with our goals, we tend to miss out those things. ठीक है. Yeah. And that's wrong. कहीं ना कहीं वही है कि great opportunities won't be labeled up as planned. ठीक है. They will And be unplanned. हाँ, there's gonna be coming up a opportunity, and that's when I call कि कोई प्लान ना होना और उसके साथ भी तुम खुश रह रहे हो, and that's perfectly That's fine. completely fine. Right. एंड एज आई टेल यू दैट अगर मेरे पास 5 साल का अपना एक गोल है, मैं अगर उसको 3 साल में अचीव कर लेता हूँ, फिर मेरे को और सोचना पड़ेगा अब क्या. बट इफ आई एम Right. नॉट even able to achieve up in 7 years, then I'll be under pressure to perform right every time. Correct. Correct. सो यही है कि ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को फोर्स करना शुरू कर देते हैं, भाई उसने अब ये सब करना स्टार्ट कर दिया, तू भी कुछ अपना कर. एंड ऑल दैट इज़ वेरी मच बैड. तुम्हारे को अपनी लाइफ के बारे में देखो कि तुम अपनी लाइफ के साथ कहाँ जा रहे हो, एंड नॉट कि, समझ लो ट्रांजिशन. बिल्कुल सही बात है. बिकॉज जैसे आपने बात बोली थी, लाइक मैंने एक बात सुनी थी कहीं पर कि योर दिस इज अ फिलॉसफी दैट योर लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट मैच जिसमें पीछे कोई विकेट नहीं है और कोई ओवर्स की कमी नहीं है. तुम्हारे पास में बॉल आता जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई टू हिट इट. जब हिट हो गया तो हो गया, जब हिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरी बॉल आ रही है. यार everyone is this much capable that he'll figure out something what to do with his life. Yeah. या I believe it that way. ठीक है. अब जहाँ तक बात आई people like, हाँ, so there's this quote by Jim Carrey that, मतलब जहाँ पे हम सारी गलती कर देते हैं इसकी, we are too much dedicated. Sometimes up in between there are times to we take things for granted, and मतलब कि तुम एक तरफ, the whole definition of this hustling is that uh, you find a void in your life, you try to fix it. ठीक है. या And you fix it, you do it in a way that this is the one thing I want in my life, and I'm willing to sacrifice everything for it करेक्ट. that I have. ठीक है. Yeah. This is the basic definition of hustling. या ठीक है. एंड जस्ट टू फिल दैट void. अब नाउ द होल थिंग इज कि अब तुम ये चीज़ सोचो, तुम अपनी कई बार अपनी ही रेस में इतना ज़्यादा भागने लग जाते हो दैट यू tend to skip all the small moments up in life. People, the last 6 months were actually a torture upon me as well, because I have ran towards my goals at a very high pace. ठीक है. करेक्ट. But on the other hand, I haven't got time to actually chill with my friends. Like the पिछले 6 महीने में I guess there is one time I have actually enjoyed. And how much time it takes to like create a memory or a moment in your life, barely करेक्ट. seconds. या That is where actually people, so most of us actually exist in our life and not live it. this करेक्ट. this especially happens up after we are into the corporate world, because every day you have a 9 to 5 of a job, and it's Monday to Friday, and then uske baad you have just 2 days to chill with your friends. You make plans for Saturdays and Sundays, and that is where when you even like start deviating from your goals as well.
लेकिन ठीक है entrepreneurship में there is no there are हाँ no like weekends and no Saturday there's Sunday. no So 9 to 5 I agree upon that like yeah, eventually the starting of all of it is going to be way too much dark and it takes something to actually get out of there because correct. ah so me having seen up a bad face at that point of time things weren't feeling up like bad मेरे को उस समय पे नहीं पता था कि ये वाला स्टेज आएगा अब कभी Yeah. मेरी जिंदगी में उस समय हाँ, पे था कि ठीक है यार ये यहाँ पे ही है ये मतलब 6 to 10 is not where a lot of these disparities come yeah, ठीक है सो हाँ बट इफ समवन विल आस्क मी नाउ कि भाई कि अगर तेरे को कल को इस फेज में दोबारा जाना पड़ा so yeah, it's gonna be bro. scary. Like it's gonna be scary. It is Yeah, something that in the long run, if that's good, then let's just play it along ना correct. देखी जाएगी जो भी होगा और So यही है पता है so most of the people of our age die at the age of 25 you're just buried at the age of 70 because भाई societal pressure you're not able to if you go up by societal pressure get married have kids their responsibilities how are you like how can you as I said if I if a person who is married ठीक है mhm, if he कल को जाके says कि यार मैं सोच रहा हूँ सब छोड़ दूँ and go follow my passion run for it is मुश्किल हो it जाए. possible बहुत It is मुश्किल है भाई possible, but मुश्किल. it is possible but definitely मतलब on because you have Depends on your partner, responsibilities right? Depends on your partner. अरे तो काफी हद. Yeah, just think of it this way ना ऐसे you have responsibilities तो yeah, भाई ऐसे तुम्हारे पास उस सब के लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है जो तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी है कि तुमने पहले डिसीजन कैसे प्लान किया हैव यू बीन exactly. प्लानिंग अप सैटरडे नाइट्स और योर एम्पायर Right. ठीक है अब अगर तुम्हारे पास फंड्स होगा देन यू कैन डेफिनेटली हैव सम टाइम फॉर योर करियर कि भाई तुम कुछ टाइम निकालो बट इफ यू डोंट हैव फंड्स देन हाउ आर यू गोना बी किकिंग अप योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड देन go follow your passion which you know that the success comes after time a lot of time सही बात है. So अच्छा सिद्धार्थ भाई, लाइक पिछले 6 महीने से यू आर लाइक काफी मच इनटू इट. आपने पहले भी लाइक काफी एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट लाइक दिस 6 मंथ्स आर लाइक टोटली डिफरेंट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप उससे कुछ ऐसी बातें निकाल सको जो आपने सीखी हो, लाइक बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑल्सो एक क्वेश्चन के साथ मैं और जोड़ूंगा, दैट इज कि व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप समटाइम्स यू रियली हैव टू गिव अप ऑन योर सोशल लाइफ, and I've seen you going through that phase, right? So उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो तो. yes so social media like uh, it is not something कि तुम बहुत ज़्यादा enjoy करोगे सोशल मीडिया से जाना ठीक है सोशल मीडिया इज समथिंग Not जो with social media, overall social life हाँ जिसे हम मतलब ओवरऑल सोशल लाइफ ही क्योंकि तुम्हारे को शुरुआत में द एफर्ट यू हैव टू पुट इन इज वे टू मच हाई yeah, once like now I know how the things work, I can manage up things upon phone, and that is so now the things are different right now. But yes, like you, so all of it is because we have been reinvesting up in our business itself. So वो नई चीज़ हमेशा आती ही रहती है हर थोड़े थोड़े टाइम में आई एक्चुअली लाइक पहले मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट किया करता था एक टाइम पे अपने बिजनेस के बारे में एंड नाउ आई हैव reduced it a lot because all because of that because I don't लोगों को क्या परसीव होता है मैं उस पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बट हाँ एंड वही कि उनको काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस इज़ दी ऑब्वियस सोसाइटल प्रेशर को कैसे टैकल करना है लाइक अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग Yeah. नॉट टू फेल इन दिस ट्रैप ऑफ लोग क्या कहेंगे ठीक है एंड उसके अलावा हाउ टू मैनेज अप मनी आई yeah, एम नॉट सेइंग दैट आई हैव मास्टर्ड इट बट आई हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग इन दिस टाइम एंड दैट इज समथिंग दैट कंपाउंडिंग इज समथिंग दैट यू स्टार्ट तुम जितना जल्दी तुम स्टार्ट right. करोगे उतना उतना बेटर अच्छा. होगा तुम्हारे लिए Right. इट इज़ नॉट समथिंग मैं 1 2 3 5 10 साल बाद भी जाके देखूंगा तब भी कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा बट इफ आई सी इट व्हाइल आई गो इन माय 60s सो
it's gonna be a hell lot of a more than a paycheck. एग्जैक्टली लाइक इफ यू लुक एट वॉरेन बफे, उसकी जो लाइफ की मेजोरिटी जो वेल्थ उसने कमाई है वो 60 से लेकर के 80 इयर्स के बीच में कमाई है, राइट? और वो इन्वेस्टमेंट उसने अपने अर्ली 20s अर्ली 30s में की थी। सो लाइक हाँ इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम जो लोग समझते नहीं है, राइट? हाँ, लाइक देखो, मैं ये मानता हूँ कि मतलब कोई भी बड़ी चीज़ ना एकदम से खड़ी नहीं हो सकती। लाइक या इट इज नॉट एवरीवन गेट्स अ चांस लाइक जियो और समथिंग, मतलब Yeah. obviously there are exceptions to everything and ठीक है, एंड उसका भी एक अलग सेटबैक होता है। जियो भी ऐसे ही नहीं कूदा था, जियो भी बहुत टाइम लेके कूदा था। और Yeah. एंड एक रिलायंस हो गया, धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, फिर कहाँ अरे से नहीं नहीं, आई एम कहाँ। टॉकिंग अबाउट, सिर्फ अगर मैं जियो की बात करूँ, मतलब जब वो हाँ आया था ना, उसने 3-4 साल पहले से ही टावर्स एक्वायर करने शुरू कर हाँ दिए थे एंड बिल्कुल। ऑल दोस थिंग्स। सो दीज थिंग्स हैपन अप, इट इज जस्ट लाइक सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब जैसे क्या होता है, ऐसे लोगों को अब दिखना शुरू हुआ है दैट आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, ठीक है, दैट डज नॉट मीन दैट ये हमेशा से मेरी जर्नी यूं गई रही थी। है। Yeah. हाँ, It has been declined. There are अप्स Ups एंड and डाउन downs. रहे। like ups and downs, and I believe that the days that break you are the days that make you. ठीक है, या कहीं ना कहीं वही दिन होते हैं, अगर तुम को उन दिनों को झेलने की ताकत आ जाती है ना, देन देयर इज नो वे इन हेल कि तुम वहाँ से पीछे हटो। एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट सक्सेस है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेलियर है, सही बात है। क्योंकि you get experiences up in that, and I am happy that I am at a situation that I get to get experiences of failures, because now I know that what to do and what not to do with my business. करेक्ट। Siddharth, like as we were talking about like what the society perceives and thinks, हम लोग कुछ भी कर लें जो वो सोचते हैं हम उसको रोक नहीं सकते, राइट? सो देयर लाइक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि सोसाइटी के रहते ही होंगे, जो कि वो आपसे पूछना भी चाहिए और आई एम प्रीटी मच श्योर पूछते भी होंगे। जब वो देखते हैं कि यार ठीक है, ही इज अ यंग 20-21 ईयर ओल्ड एंड यू नो लाइक doing like he's kind of successful and all, so like the questions just push it out there like what is a good thing or bad thing about your life, like are you happy with your life right now, and most importantly where do you see yourself, where do you wish to see yourself in the future? So कहीं ना कहीं ये वाला जो सारा के सारा फेज है, दिस हैज बीन अ लाइक happy as well as sad at points. Like be happy Yeah, because I have been learning things a lot. Uh, right. the people who are in my age are not learning it. Mm-hmm. मतलब because ठीक है, so and sad because I'm actually not getting up time for myself, and कहीं ना कहीं I'm scared that the mistakes I've done in past I haven't actually like covered the gaps and all. So basically, all matlab, but there are days that actually so I don't get to overthink. That's a good thing. But on the other hand, sometimes overthinking is good. Overthinking is good in manners कि भाई I get to see all the possibilities where I can be delivered up, and I can get a pre-assumed solution to it beforehand. ठीक है, सो Hmm. ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड इफ इट इज डन इन अ वे कि तुम इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे। ओवर Right. थिंकिंग इज बैड इफ यू आर जस्ट होल्डिंग अपॉन योर Yeah, ऑल if योर it's इनसिक्योरिटीज, एंड that's a giving very you big of a trick. My therapist always tells me that if you think up of all the negative things, the negative things are going to multiply. Think of the Yeah. yeah, positive things and the positive things are going to be multiplying. So अपना आउटलुक हमेशा लाइफ को पॉजिटिव रखो। आई वॉज अ वे नेगेटिव एंड टॉक्सिक पर्सन एज वेल, एंड shout out to my friends who have actually listened to all my crap, because to be honest I have had no patience to hear, मतलब अगर मैं खुद को सुनने बैठूं आई हैव हैड नो पेशेंस फॉर इट। ठीक है, और लोगों ने एक्चुअली में मुझे घंटों सुना है एंड हैव एक्चुअली हेल्प मी आउट, नॉट Hmm. इवन like apart from my therapist as well, because yeah, sometimes she used to टेल मी कि ये वाली बातें जाके अपने फ्रेंड से किया कर, एंड पिछला एक साल हैज एक्चुअली हेल्प मी अलॉट मेंटली टू ग्रो, एंड नाउ आई एम एट अ वे मोर पॉजिटिव journey in my life rather than what I used to be, and that is the importance of being positive. Like there are some times that being negative helps you, but being positive has a way better outlook towards life and everything.
नेगेटिव कैसे कि हाँ मैं वही तुम्हारे पूछ को, रहा हाँ मतलब भाई, अब जैसे देयर कैन बी थिंग्स जहाँ पे तुम्हारे को रिस्क वगैरह से बच के अगर चलना है, लाइक देखो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। था। नेगेटिव कहाँ पे, जैसे तुम नेगेटिव, अब जैसे कुछ करियर ऐसे होते हैं कि भाई जहाँ पे तुम्हारे को चीज़ें देखनी होती है बिकॉज यू हैव टू fill it. Like if I call it all about stand up comedy. तुम नेगेटिव या चीजें देखते हो, तुम उन्हीं के बारे में ही जोक्स करते हो, Yeah. एंड जोक्स आर ऑलवेज ऑफेंसिव टुवर्ड्स एनीथिंग इट इज गोना बी। तो ठीक एक है, पार्टी के लिए ऑफेंसिव तो होते ही हैं, सही बात है। किसी ना किसी के लिए तो ऑफेंसिव होंगे ही, ठीक राइट। है। एंड दैट्स द होल पॉइंट कि पॉजिटिव रहना इज अ सॉल्यूशन बिल्डिंग आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स लाइफ। राइट। Also, कहीं ना when you कहीं talked about self doubt पहले, that is also look एक तरीके से negative, लेकिन self doubt होना, as you have said before, is actually a positive thing because अगर कोई इंसान So, की so, so, कैपेबिलिटी नहीं है वो like, कभी भी हाँ, so self-doubt is something that is good. अगर तुम्हें को है तो अच्छी बात है। Self-doubt, you'll always see a person self-doubting yourself. जो मतलब, let's just assume that a person who has no ambition, no goals in life, he won't ever be doing a self-doubt. या वो ठीक मजे है, में है। वो मजे में है, वो खुश है, वो जहाँ पे अपनी लाइफ Yeah. से है। एंड सेल्फ डाउट इज happens up to someone who is ambitious and who is, so don't be materialistic, but yes, have ambitions or self doubt. How to deal with self doubt, मतलब to be honest, even I am not a very good person to deal with it because कहीं ना कहीं it happens up, because या what happens up is you throw yourself of problems जो तुम्हारे लेवल से actually बड़ी हैं, and you don't know you are capable of doing handling all that bullshit or not. But the thing is, the moment you do, you grow, ठीक है। अब जैसे if I look at the problems that I have had up in the past, I'll say ये तो I could have run over it, like अगर वो मेरे पास अब आए तो I am not worried, or I don't give Yeah. that much of an importance to grow it into my head, and that's okay। मतलब कहीं ना कहीं ठीक है। अब जैसे अगर मैं मनी वाली एग्जांपल दूं, ठीक है, कहीं ना कहीं अब आई एम नॉट दैट मच अम्यूज अबाउट मनी, ठीक है। बट पहले की तरफ अगर मैं देखूं, माई तो सोल बहुत मोटिव ऑफ एंटरिंग इट अप। और यहाँ पे ही पता है क्या होता है, जो सोसाइटी का एक और ये वाली चीज आई लाइक टू ऐड, सोसाइटी में ना, दिस अ वेरी गुड कोट बाय जिम कैरी, ठीक है। सो एवरीवन शुड बी रिच एंड फेमस, या so that everyone should be rich and famous so that they know that it is not what it takes to be happy, एग्जैक्टली। ठीक है। नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ, पहले अब प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में पहले भी थी, द ओनली सोल्यूशन आई गिव इट टुवर्ड्स मनी। नाउ आई हैव इट, अब प्रॉब्लम्स नहीं है, दे अभी आर भी गोना बी देयर एंड दे आर Yeah. गोना स्टे माई एंटायर लाइफ, या ठीक है। सो यहाँ पे अब जैसे क्या होता है, तुमने यहीं तो यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तुम जाते हो, मतलब तुम एक ऐसा अपना लाइवलीहुड बनाओ दैट यू लव इट योर सेल्फ, स्टॉप एग्जिस्टिंग एंड स्टार्ट लिविंग। या मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल आउट हेयर। ये तो मतलब इफ यू आर अ जॉब पर्सन, यू विल रब yourself 9 to 5 every day till Friday, and then you'll be planning up Saturdays and Sundays. और उसके बाद if you are into business, you'll not prioritize things. Little things matter, आई little थिंक things genuinely matter। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस जो है वो छोटे छोटे मोमेंट्स में ही होती है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, मतलब Yeah. इट कम्स विद, यार मैं बोलता हूँ, इट्स अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। तुम एग्जैक्टली। हैप्पीनेस हमेशा रहने नहीं वाली, इट्स गोना कम एट मोमेंट्स अप इन योर लाइफ। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ, लाइक इट कैन बी विद, लाइक हर किसी की डेफिनेशन अलग है हैप्पीनेस की। अब जैसे ये जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ, इफ आई एम गुड एट डूइंग इट, इट कीप्स मी हैप्पी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, पीपल बिलीव मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तू खुश क्यों नहीं है? नहीं हूँ, वो देखो ना तुम प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इट कम्स विद, लाइक
for me, happiness is different things, getting up different experiences, traveling up places, and spending time with people who I care for. It can be different things. And to Yeah. be honest, the last 6 months, the only break I have had is meeting some people for some time. That too for not long, और ये पूरा Yeah. दिन तुम साथ में जा रहे हो, outing कर रहे हो. Like I guess only one outing I have had. बाकी तो ये था कि भाई मिल लिए थोड़ी सी देर के लिए एंड बैठ गए एंड all that thing, and that is where I believe this pandemic has actually shot, because people are afraid to get out even right now. Like the cases are Yeah. actually rising up at a very high pace every day, and Yeah. people want the colleges to open just because of that, because some people have actually haven't कोविड got out. फटीग, राइट, थक गए हम लोग कोविड, लाइक इसको इसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है आजकल, कोविड फटीग, दैट यू आर बेसिकली लाइक अरे मतलब जस्ट थिंक ऑफ दिस वे ना, कि अब जैसे लोगों को लग रहा है मैं बाहर निकल पा रहा हूँ तो आई एम हैप्पी. या Yeah. यू नो व्हाट, कई अभी लोग घर से बाहर मैंने नहीं एक जगह निकल पे रहे हैं. पढ़ा था कि आजकल एक टर्म यूज किया जा रहा है, दैट इज रिवेंज वेकेशन. That is that people are deliberately going on vacations right now, or there's some psychological aspect to it that people are saying that this is actually एक तरीके से अंदर revenge की जो कहते हैं ना, एक emotion आता है उनके अंदर, that you Revenge like against due to COVID. covid due to covid मैं 6 महीने घर पे बैठा था, तो अब मैं बदला लेने के लिए जबरदस्ती जाऊंगा. Like I don't think he maybe it doesn't make sense, but like that is how psychologists are putting up, like this is actually a phenomena that is happening right मतलब ठीक है देखो, हर किसी का अलग आउटलुक होता है, ठीक है. now. सो ऑल ऑफ इट बेसिकली कम्स विद कि कोई कैसी सिचुएशंस में रहा है, ठीक है. Yeah. मतलब वी हैव एक्चुअली सीन थिंग्स हैपनिंग अब, लाइक कि for people who are actually going through mental health and all. Like if I really tell you, if I would have been in a situation, the only reason I went back to work was कि मुझे घर में नहीं रहना था, because I, from where I have been, like the environment I have kept myself in, I keep myself surrounded with things that Yeah. actually gets me no time to overthink, and that is the reason I started going to office and like started helping out my dad as well. Mhm. Now the situation is different, and it's way better than that. But yes, if I imagine myself being at home for this long, then I don't know what would have I done, because to be honest, that is Yeah. Interesting. very very harsh on mental health. I think I would say that's why like this podcast is one of the reasons. अगर हम लोग शायद ये ना कर रहे होते, हमारा दिमाग इस टाइम पे सही में पगला गया होता. हाँ, like ठीक है, like the also this thing that pandemic has actually made a race for all of us, कि भाई Yeah. कौन कितना Yeah. प्रोडक्टिव है इस टाइम पे. Yeah, that Yeah. is And true. That is true. life is life is not about productivity, it's about whatever keeps you happy. Yeah. ठीक है, Exactly. मतलब you have to find that one thing and you have to run for it. But ठीक है, like Yeah. it might be Like this. कई कई जगह ये बातें बोली जा रही हैं कि ड्यूरिंग लाइक दिस पैंडेमिक टाइम पता चल जाएगा आगे 1-2 साल के अंदर कि कौन कितना आगे निकलने वाला है, बिकॉज लाइक अगर आपने इस टाइम को ढंग कोई से कहीं नहीं निकल रहा. I'll यार tell वो you. अरे वो सुनो वाली सुनो बात सुनो. सो एज अच्छा, लोगों का परसेप्शन बोलने के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है. है. हाँ. अच्छा नाउ लोग मेरे को कहते हैं तू तो भाई तू तो बाहर निकल रहा है, तू खुश है. हम्म. मेरे से पूछा किसी ने? बाहर निकल के आई एम नॉट मीटिंग अप, आई एम जस्ट मीटिंग माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट इवन एंजॉयिंग विद देम, Yeah. जस्ट चिलिंग. मीटिंग देम. हाँ मतलब वही होता है ना कि जिस कि 1 घंटा तुम मिलिए बस बात खत्म. उसमें Yeah. भी कुछ बातें नहीं हो पाती हैं Yeah. मतलब. That. ठीक है, एंड दैट्स ओके. ठीक है, अब पता है क्या होता है, जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे तुम्हारे को मिल रहे हैं ना, द एक्चुअल लाइफ इज वे मोर डिफरेंट देन योर्स. लाइक it is as big as offline learning and online learning in colleges. या आई थिंक इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता. Yeah. तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, talking about your journey and all. So, how do you think this whole journey has changed your outlook towards your life? Outlook has actually changed. Like earlier
for me, business startup, like basically we have seen in some time we have seen a lot of startup culture. The thing is that people don't realize is कि uh, you are just seeing a person from the time he has actually came up into limelight. You haven't seen their struggles. मतलब Right. even if I tell people about my story right now, people try to co-integrate it like in a way कि भाई कहाँ से start किया and कहाँ जा रहा है types, all that things. So people basically need a success story or sort of a thing and just believe it. Success is a time-taking process and there's no shortcut to it. ठीक है, and there are different definitions of success as well. सो वही अब जैसे क्या होता है लोग क्या करते हैं कि भाई तू हमारे को हेल्प कर दे ये वो and ठीक है यार अब हर किसी को बट एट द एंड ऑफ द डे अपनी जर्नी तो खुद ही लिखनी पड़ेगी ना इट Yeah. कैन नॉट बी कि आई एम गोना हेल्प अप देम एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ अपना सबरा को छोड़ के so like I recently met up with a venture capitalist he's a within a short span of time he has been a very good friend of mine now at this point of time and he actually tells me like I actually categorize people on four bases like this is someone I actually got a theory from somewhere and I actually realized it's a bit helpful as well. This is known as MEVA factor. M stands for moral, ethics, values, and attitude. Attitude in the sense that if I'm talking about a soldier being died, a person who is into glamour won't be actually able to speak up that much. But a Yeah. Right. person who knows all these things would be able to. And all those things actually, moral, ethics, values, all these things actually tell a lot about how what sort of a person are you, how you treat the people uh, who are your superior because you have to treat them with a dignity, but and how you treat the people who are not that much privileged like you, because that speaks a lot about your character. And he's someone that the friend of mine, the VC, the person who's working in a VC. So he has actually like changed the outlook of my life entirely. He's someone that will speak and I'll just listen to him and I won't speak at all. He's very good at things like all these understanding basics of how to start and all of these things. Now, so we have had random discussions, and upon this, I'll also like to like people what they tend to do the mistake they do is that while they are hustling they cut off from everywhere and I believe that is not important यार काम तो तुमने पूरी Right. जिंदगी करना है Hmm. पूरी जिंदगी तुम अकेले रह सकते हो दोस्तों के बिना नहीं. ठीक है सीधी सीधी सी बात है मतलब काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस परसेप्शंस हैं एंड वही है आई डोंट गेट इट व्हाई पीपल डू ऑल दीज थिंग्स दैट पीपल ट्राई टू गेट बैक एट यू एंड ऑल दैट ठीक है आई गेट इट दैट यू सी अपॉर्चुनिटी and I even like the platforms where I even judge at, I don't be like I'm not biased to anyone because to be biased to for someone of your own you have to do injustice towards anyone else and I don't think so like we have a very bad mentality up in India. The thing is that if one person is growing up everyone starts blaming him up कि भाई ये सारों की success लेके जा रहा है why एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार तुम खुद भी सक्सेसफुल हो सकते हो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज गोना बी टोटली अप टू मतलब बस ये चीज़ समझो लोगों को ये लगेगा ये ऊपर जा रहा है ये सबकी खींच के जा रहा है इफ आई एम एट अ स्टेज दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइस आई नेवर stop anyone like if someone comes up to me with some solutions or something I never stop them up ठीक है I Right. try to help them up कि जितना हद तक हो सके अब Yeah. क्या होता है कई बार इसी सब के चक्कर में मतलब पीपल हैव कि ये भाई बहुत आसान तो नहीं है सक्सेसफुल होना बिकॉज इट इज गोना टेक द टाइम बट Yeah. इट इज गोना टेक एंड definitely the methods can also be different something that has worked for me might not work for you or something that has not worked for me can work for you getting it Right. उसके चक्कर में यू डू थिंग्स लाइक कि तुम किसी और को नीचे करना और ये सब
trust me, हाँ मिल मतलब जाएगा। the हाँ ठीक है, and the people who are I don't I keep checking up on my people, and that is the only reason, because if uh so here it is. If you try to pick up a fight with them, you pick it up against me, and every of our close ones, like if I talk about my school circle, my college circle, they know about Yeah. things. Okay, that I take shit very personally sometimes, and okay, I'm not someone who goes with this mentality that moving upon is the best revenge, but Yeah. revenge is revenge, and if not now, we'll see it sometime in future. Let's just hope it comes quick. And Yeah, okay, like right. uh, the friend of mine actually curses me for this thought, and that's Yeah. completely fine. It's his way of looking at life, and it's my way of looking at life. I cannot stand like uh because I try to do things, and I don't understand why people do things. Like if I'm giving you my 100% and Yeah. I'm trying to check up on you, I try to help you out in your difficult times. I make that pretty much sure that if I'm not available upon the good times, I should be there upon the bad times. Because to Right. be honest, the true Yeah. friendships are not like what the perception has Yeah. actually been made of in this world. Right. My so that's the whole point. Like you have to actually see who are your people. My people know that if they are going through something and they want to talk it out with me, I'll be always there for them. Yeah. And that is something they always say ki matlab, and that is why I feel bad. It is not that I am not insecure at this point of time about some things. Like the only reason I even take therapy is because uh, there are different reasons, but one of them is because I call these people up my back. And I how I believe is that if my back is stacked, okay, Yeah. and if it's perfectly fine, then it gives me up a, like, I'll just say that I can take a swing up at anything It if I gives you have these strength. people. It gives me strength, like, because just understand it this way: when we are up at an entrepreneurship stage, every day the situation is going to be different. Okay, every day the situation is going to be very different from what it is today or what it is going to be tomorrow, and what it has been. So it's a journey. Okay, and what happens up is when anything happens up bad upon any of other fronts, my business life, my professional life, anything else. Okay, so I go back to these people, and because it makes me insecure that how the things are going up outside. So coming up back to them and seeing that while everything around me is changing up so rapidly, and there are some things that are gonna be there with me, like there's something that it actually gives me a sense of relaxation कि भाई जहाँ पे बाकी सारा कुछ बदल रहा है इतनी स्पीड से, there's something that is not changing. That's And correct. that is the bond with my friends that I have. They know the extent I can go for them, and I I feel bad about some things that, as I told you, that we tell them about about our insecurities, and they feel like they try to do things with them that to make us feel bad. And apart from that, they leave. People leave after sometimes. So okay, it's just okay to, let's just say, take things for granted, but make that sure that you don't do shit with anyone. And it's like Because really you don't, important to talk हाँ about because it, because that is how the real life is. And people just perceive कि बंदा यार entrepreneur है, he is earning money, everything is just fine, but that's not how it is. और जो so problem एक normal बंदा face करता है वो उस phase में भी आपको face करना ही पड़ता है. and that's the whole point, na? Like as I said, once I have my back stacked, I can actually like go up against anything in this world, and like because I know there are gonna be people who are gonna be assuring me up again and again that you are doing just fine and you are doing amazing job. ठीक है, Correct. Yeah. एंड दैट्स ओके भाई. तुम खुद सोचो तुम कितना, मतलब, एंड दैट इज द रीजन आई से कि मैं इन बॉन्ड्स को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज कहीं ना कहीं यही बात है, काम तो पूरी ज़िंदगी करना है. सही पूरी बात. ज़िंदगी अकेले रह सकते हो?
Right. सी मैं आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एक बात की थी कि आजकल का जो हसल सिनेरियो है, वी आर आल्सो ओनली टॉकिंग अबाउट हसल, बट यू नो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट क्रैप ऑनेस्टली. दे आर जस्ट लाइक, you know, forget about your friends, your family, Yeah. just work, but that's not how it is. Like you have to give importance to everything. मतलब हसल के चक्कर में बेवकूफ तो ना बन जाओ. There has to be like a balance of each and everything. Right. Your towards your professional life, like it also comes with stages. Like if you'll see the people, you always tend to lose people while you grow, and because you know that, like earlier my perspective towards people was quantity over quality. Hmm. Now it has actually been quite different. If I really tell you, I now prefer quality over quantity any day, and that is now with each and everything. And It's that just is like how it 80 should 20 be. rule, Yeah. huh?